समस्त फर्स्ट अटेम्प्ट के ऑलरेडी देइछंती एग्जाम? यस सर मु देछि। ओके, लास्ट ईयर मेंस देइथिले माने ए मेंस? ए वर्ष मेंस। ए वर्ष मेंस देइछंती? या सर। ओके, केमते हितला एग्जाम? हां सर सेमते हेछि, एते भलो भी हेनी। ओके, ज्योग्राफी क्वेश्चंस, ज्योग्राफी रो पेपर? ज्योग्राफी रो पेपर हां भलो हेछि। भलो हेछि तो? ओके, आज्ञा। सी जदी एथो एमति की माने ज्योति भाई कोथले से देइछंती तो एवरीवन लाइक समस्ते गोटे थरो हैव यू गॉन थ्रू द दिस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शन? देखिले क्वेश्चन एनीवन? ना सर हमें देखने सर फर्स्ट टाइम तो ओके, क्वेश्चंस देखना है, ठीक है जी। सी no, okay, see, first thing first, I expect you should have gone through the syllabus. Okay, so the syllabus of माने syllabus किसी change करेनी as far as optional is concerned. It is same as it was in the previous pattern of examination. So this is your physical geography that contains 5 chapters: geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, and environmental geography. Then section 2 or section B of the paper 1 is the human geography. Under the topic of human geography, there are five topics, 5 chapters. One is your perspective in the human geography. Next is economic geography, population geography, settlement geography, and regional planning. Okay, so what it told is like candidate should have like will require to answer one compulsory map questions in each paper. So माने जदि previous patterns पर्यंत जदि देखिबा, so that is one map question माने गोटे 60 मार्क रो map question रहुथिला एबे पर्यंत, that will be in the section A. Okay, so similarly paper 2 जोटा कि इंडियन ज्योग्राफी with special reference to the ओडिशा जदि देखिबा, तो section A रे अछि physical aspect, then resources, agriculture, industry, transportation, communication and trade. This is your section A of the paper 2. Next होछि section B रे अछि cultural setting, settlement, regional development and planning, how होछि political aspect, and finally contemporary issues. तो एठी भी similarly गोटे map question अछि. It was as far as the previous pattern is concerned. माने जेहेतु optional रो माने syllabus change करे नहीं, तो we expect obviously you will get map question, you will get this type of sectional question, section A और section B रो. The only thing, हेलो सर मोर डाउट थला। हाँ कौन सर मु कहली जो पेपर 1 रे जो ऑप्शनल रे से मैप आसीबो ना सेमती यूपीएससी पैटर्न रो फॉलो करिवे? देखो हाँ आपण क्वेश्चन वैलिड जे जदी यूपीएससी रे तो पेपर 1 रे आसुनी तो मे बी जदी न आस्तारे, किंतु सिलेबस से माने चेंज करी नाहंती ए पर्यंत ऑप्शनल रो जे सिलेबस देखिए सिलेबस रे मेंशन करिछि एक्सप्लिसिटली माने बॉटम रे कि मैप क्वेश्चन आसीबो कहि कि, तो वी एक्सपेक्ट कि मैप क्वेश्चन विल बी देयर, किंतु यूपीएससी रो सिलेबस रे सेमते एक्सप्लिसिट मेंशनिंग नाही. आज्ञा सर। So based on that, because see देखो जेते पर्यंत हमें एग्जामिनेशन देइनु सेते पर्यंत exact pattern of the examination is still to be it is unknown, but expectation तो हमें जो भी facts हम सामने रे अछि ओपीएससी जहां दउची गाइडलाइंस ता बेसिस रे मे बी जदी किछि रिवाइज करे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट जेहेतु ऑलरेडी पब्लिकेशन हे गलानी so nothing is going to revised as far as your syllabus is concerned. OPSC is not going to change anything. On spot change करते हैं, but that is different thing. So we will expect we are going to get some cartography question in each paper, paper 1 and paper 2, and rest the pattern of the questions will be changed. It will change for sure because देखो तो 250 marker ही गला पड़ता है, अगर 600 sorry 300 थिला तो जो 60 मार्कर 20 मार्कर से फॉर्मेट जो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू चेंज. तो इट इज रिमेन टू बी सीन कि एग्जैक्टली से को टाइप रो पैटर्न फॉर्मेशन करूछंती. तो आवर अप्रोच राइट नाउ शुड बी देखंतु फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट एक्सपेक्ट यू आर गेटिंग ए 60 मार्कर दिस टाइम, आई डोंट एक्सपेक्ट, बट स्टिल ओपीएससी रो जते पर्यंत क्वेश्चंस आसेनी तो एग्जैक्टली तो श्योर नहीं. So our approach should be we should read a question in the 60 marker format, but
uh, we should be in such a position if it is asked for 20 marker, 30 marker, 40 marker, 10 marker, so we'll be able to amend ourselves. Okay, so see, upon if you have a larger content, what you have to do, if it is asked for a 20 marker or 10 marker, you have to cut short the thing. How you are going to do that, you will learn while we'll go for the answer writing things. Test series now our prime objective should be to understand the concept. So unmute करना माने question kindly mute कर दियंतु. सर मोर गुटे डाउट अछि सर. हां पचरंतु सर मोर सोशियोलॉजी ऑप्शनल अछि. हां मु ज्योग्राफी ऑप्शनल मते लाभ दबो कि देखिले अटेंड करले चलिबो. देखो सेटा लाभ दबो कि माने आप ऑलरेडी सोशियोलॉजी अछि काहे कि चेंज करियो चाहउचंती. ना ना मु चेंज करबा चाहूनी. एटा मत माने प्रीलिम पाए रे किछि काम दबो कि कोछि प्रीलिम रे किबा जो पेपर पाई आपण काहे कि ऑप्शनल क्लासेस करिवे कहबे. माने क्लास ऑप्शनल तो माने बहुत डिटेल स्टडी ना. प्रीलिम पाई काहे बेकार. ठीक अछि सर. थैंक यू. आ ए जो मेंस रे किछि काम दबो. नहीं देखो ना मेंस रे जो माने जीएस प्रोस्पेक्ट जीएस रोटा कोन सिलेबस टा टिके लिमिटेड थाए. ऑप्शनल रे कोन एक्सटेंसिव पढंती तो एक्सटेंसिव क्लास काहे कि करिवे ते. ठीक अछि सर. सर मु सेटा मु काहे कि टाइम वेस्ट कर ऑलमोस्ट किछि पढिबो. हां सेटा बेटर आपण से जीएस रिलेटेड जदी किछि क्लास हबो ज्योग्राफी रो दैट यू शुड अटेंड. थैंक यू सर. ओके ओके. हां सो as we are discussing कि आपण पाखरे तो ए क्लास ऑब्जेक्टिव इज you should understand. माने फर्स्ट होची आपन को सब्जेक्ट और ईच पॉइंट ऑफ योर सिलेबस यू शुड हैव ए क्लैरिटी अबाउट दैट. तो आपन बारे जदी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, then after that you will be able to tackle the question in any type of like any pattern of question they are asking, be it 10 marker, 20 marker, 30 marker, 40 marker, irrespective of that. Okay. So optional class, yes, it is a optional class. We are going to start with the first class. So just I'm giving a brief idea. So that is the expectation of the class, and exact pattern of the question that will be dealing with. Like we'll try to implement the different type of questions when we are going to start our writing practice. So that I'm a different type of questions we put career different markers, and we'll try to enlarge our aptitude, okay, of writing the questions. So till that point, don't like you don't panic how to attend and what to do for the examination, but we'll do in a very extensive manner. And this is a promise from my side. If you'll be doing this class like honestly, and you are honest towards your own preparation, because see, it is a class that I'll be guiding you with some informations. I'll try to make you understand, but finally there are a lot of things that you have to do from your side. Like you have to revise the concept, you have to remember the thing, you have to start writing when I'll tell you when you have to write. Those are certain things that you have to do. As far as material is concerned, as far as understanding is concerned, that is my part of job. That I'll be providing you materials, that I'll be providing you understanding towards the subject. That is my part. And as even the R&D towards the what kind of questions and the pattern and everything that we can expect from this new style of examination from OPSC is concerned, that is also my part. But I expect you guys to be actively participating in the class so as to get the maximum benefit out of this. Because see, when you are preparing this 1 year of preparation or 8 months, 9 months, it is very much crucial for you. You are investing your preparation time for 1 hour of preparation time in this class. You should get the maximum out of it. So only getting some, see, a class jodi a motive re karibe ki mu kebolo kichi notes pai jibi, I don't think this is the right platform for you. If you are doing this class to get the understanding regarding a subject towards a topic, it will help you. Okay, before starting with the exact topic, let's have a quick look how are the questions they have framed this year. Okay, in the paper 1 and paper 2. We'll start with the paper 1. This is the paper 1. So don't go by the sections and everything, because probably it will change. Okay, so कौन आसला कि 10टा क्वेश्चन से पचरे. These are your cartography question. आपण मैपिंग करिया को पड़े. नाइल रिवर थिला, स्वराज द्वीप थिला, सुंदरबन थिला,
Aravali thila, then Park Bay thila, Periris thila, Caspian Sea thila, Greenwich thila, and this is your Suez Canal thila, equatorial current counter current thila. See, आमे जो क्लास रे जो कार्टोग्राफी करथिलु, so cartography class of cartography ru Nile. I am not telling Swarajdeep was there because Swarajdeep to Andaman Nicobar achi. You may have a rough idea. Sundarban, Aravali, then Park Bay, Periris, Caspian Sea, Greenwich नथिला काहे कहबी Greenwich expect के आपण मानो idea थिबो Suez Canal and equatorial counter current. It was a part of oceanography. तो एडू ए Greenwich आउ स्वराजदीप ए दिटा को छाडले बाकी ए 8टा का पॉइंट हम क्लास रो कार्टोग्राफी वास्थिला. ओके नेक्स्ट ऑब्वियसली डेविस बैंक रो जो मॉडल टा रहिला डेविस रो इरोजनल साइकिल मॉडल थिला बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिस्क्राइब द वेदर. एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन थिला माने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर डिफरेंट फेनोमेनन व्हाई माने डिसिपेट ओवर द लैंड. एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन द क्लास. एटा भी इवन ओशियोनोग्राफी मु एटा माने इवन प्रेडिक्ट भी कहितली पिलां को कि एथरो कोरल रीफ रो ओशियोनोग्राफी रो चांसेस मु इवन कहितली जे हां ए माने ए जो हमर रहिला कोन क्लाइमेटोलॉजी रो क्वेश्चन नो आसी पारे बट ओशियोनोग्राफी रो क्वेश्चन आसीबो. तो क्लाइमेटोलॉजी रो बहुत इजी क्वेश्चन आ जायतला. ओशियोनोग्राफी रो मु कहितली माने गोटे इक्वेटोरियल ए जो ओशियनिक करेंट्स कथा कहितले और कोरल रीफ कहितले एंड कोरल रीफ वाज देयर इन द एग्जामिनेशन. So it was very expected line of question as far as this section A जो paper 1 is concerned. Section B रे भी जो देखिए it was completely direct questions. Everything was directly from the notes. Okay. Cause of migration थिला, roster of stages of development, primate city, limits to growth, everything from the syllabus. Okay. Examine the contributions of geographer in the development of the behavioral geography जो हमें कहूचे. तो it was there obviously but एटा भी गोटे कथा मु कहि दोची कि मु निजे भी कहितली क्लास रे जो हमें ए जो पार्ट टा रहिला पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी जनरली बिकॉज़ दिस इज अ लिटिल completely theoretical part टा. So it's bit difficult because एटा completely understanding और गोटे philosophical part. So मु बारंबार क्लास रे भी कहे कि if it is not that required then prepare this topic for a 20 marker. Even I have advised my students. So mu कहबिनी जे ए क्वेश्चन ता डायरेक्टली मो माने क्लास उ थिला कहि कि because I have told my students not to read this type of not to attempt this type of questions in a 60 marker. So 60 marker आपण attempt करिवे आ एग्जामिनर को भलो लागिवनी से they are not going to give you a good marks. Okay. So it was not there. Mu कहबिनी it was not there. Okay. Then Smith ro model asla directly from the syllabus. Next माने directly from the notes on the class. What is reason, classification of reason, stating basis of classification. It was direct question. So ये सब भितरु this is not, I'll not say it is a direct question. Apart from this, every questions that was there except these two lines, Greenwich और रहिला जो स्वराजदेव, everything was there from the class itself. Even किछि expected questions भी देइथिले चिरंजीत भाई देइथिले ग्रुप रे. I was busy on the last period रे. तो तांको क्वेश्चन तांको जो भी expected question थिला से भितर सब क्वेश्चन आस्थिला as far as paper 1 is concerned. Coming to the paper 2 रे कोन थिला कि paper 2 was bit difficult. Why it was difficult? Because the questions were asked in a applied sense. So it was not direct. It was based on the concept and it is applied. सेइथि हम बारंबार कहू छी कि rather mugging up, just going by the notes and the resources may not help you in the examination, but the understanding towards the subject will give you a better position in the examination. So coming to the paper 2 रो obviously all the time paper 2 रो कोन होय कि जो मैपिंग गुडा का ना टिके out of the box था. If you will go by this time also it was like that. The Pasighat थिला. Pasighat was expected because Arunachal re last 2 years back the one airport was commissioned. It was Pasighat. Then Asambu Hill, it was bit difficult. Then Talakabari, okay, it is good. मैंने जो टाइम अटेम्प्ट करिवे सांबर लेक very easy. Mosin Dam was there. Jolapur Dam, Odisha Andhra border रे अछि. Then Kuldiya Wildlife Sanctuary, it was in news. बारंबार ମୁଁ कहितली किछि इनसो को न्यूज रे भी देखिया पई. Obviously I have not covered during my what you can say mapping part, but I have told
even I am telling you right now, when you are dealing with like coming across news like national park, some earthquake, some kind of volcanic activity, then do have that 1 minute extra to search in your Google map and to point out those locations. Just have a rough location, rough idea about that that position of that particular place. It will help you, because ଏବେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମାର୍କ ଏଇ ପୋଜିସନ ଟା ଆଜି କରିଥିବି କଣ ଏକ୍ସାମ ରେ ମନେ ପଡିବ କି ମାର୍କ ମାଇ ୱାର୍ଡ ଇନ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ that distance dream, like ସେଇ information ଟା ଆପଣଙ୍କୁ recall ହବ. Okay, next interview island, it was a bit difficult. Then Valka Cliff, it was difficult thila, but Dudhsagar was direct. Then Dosa district, okay, it has Nua district create करले, that's why they asked about this. And Mahabaleshwar, it was state. Paper 2 रे कौन था extra कौन फायदा था, because they used to ask 12 and they will ask you to point out 10. So I'll tell like, okay, if you have gone through the mapping in the paper 2 like in our class and you have done your little bit of research, so out of 10, 7 to 8 you can make right. Okay, so that 7 to 8 right marking in the paper 2 itself is a very good, okay, it's very good as far as paper 2 is concerned, and considering the standard and the difficulty level of the question. Okay, ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିବି 2020 ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲି, so I have done 6 or 7 right, so I have got around 200, so that's a good mark. Next, see, these are the implied questions that I was talking about. ଯେମିତି ପଚାରିଥିଲା too much water and too little water is dangerous. To be frankly speaking, directly from the syllabus, how you see it is what it is, they have asked about the flood and the droughts. जो physical aspect of देखियो flood और droughts, ये जिनिसटा को if you are able to understand the question, then you will be able to attend it. Okay, so too much water and too little water is dangerous. Justify the statement with a suitable example in India. Okay, so it is directly from the exam syllabus, but you should be able to understand the question. Next, describe the implications of using of higher dose of fertilizers on the environment and the human health. Taking any Indian state benefited under the Green Revolution. So here the crux is the Green Revolution. Green Revolution को था पचारची, तापर पचारची को Indian state जोटा कि you have to take an example. Suppose आमे जान चु Green Revolution in general हम मानो कसले पंजाब हरियाणा those states will come into mind. So कौन सी गोटे state नहीं जीवे as a case study, and what they are asking about the impact of the, see जब Green Revolution पढ़ुचे, Green Revolution रो main जिनिस कौन, you can tell me what is Green Revolution? What is Green Revolution? Sorry. सर व्हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करिए ना. हाँ देखो तो ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट प्रोडक्शन को था नहीं, हमें हाँ व्हीट वाज द आउटपुट, बट ग्रीन रेवोल्यूशन seeds and fertilizers use. यस सिंपल को था जेमते अपन कहते कि सर फर्टिलाइजर हाइल्ड वेराइटी रो सीड यूज करके जो हाई प्रोडक्शन के थिला कंसीडर कंटीन्यूअस फार्मिंग जो इंडिया रो खाद्य समस्या आस्तिला, तो सेही समय रे ग्रीन रिवोल्यूशन ता ही स्टार्ट करा हितला. यस दैट्स व्हाट माने जदी क्रॉक्स ता अपन सेटा कहले जेमते कि माने ड्यूरिंग माने जतोला हम पार्टीशन हैला तो सम फर्टाइल लैंड्स वेंट टू द पाकिस्तान. ओके, मार्केट पाकिस्तान जोड़ा हमें कहू ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को पड़ेला, ऑल ऑफ अ सडन वी एक्सपीरियंस्ड ए फूड क्राइसिस. तो जतोला हमें फर्स्ट 5 year प्लान भी जतोल देखिबे इट वाज फोकस्ड ऑन द माने एग्री प्रोडक्शन. सेठी पे हमें माने जो हमें कहू डिफरेंट डैम्स बा मल्टीपर्पज माने जो डैम्स पड़ा कहला डिफरेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, दैट वाज माने फंड्स वर चैनलाइज्ड टुवर्ड्स दैट. तो जनरली हम तापरे कोन हला कि जतोले माने वॉर हमें दीटा देखलु माने कंटीन्यूअसली जतोले चाइना वॉर हला ता पाकिस्तान वॉर हला तापरे कंटीन्यूअसली ड्रॉट्स हितला. तो इंडिया हैड ए बेगिंग बोल इमेज हमें कोचु. ओके, इंडिया हैड टू रिलाई ऑन द फॉरेनर माने फॉरेन कंट्रीज से माने हमु किछि ग्रेन्स देबे, तो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू फीड माने हमरो पुअर माने जो भी पॉपुलेशन अछि वी आर गोइंग टू फीड ऑन देम. ओके, हां तो देन कौन हैला इंदिरा गांधी कैनाल ता पर जिंस इंदिरा गांधी कैनाल ता अपन पढिबे जेतोला अपन कमांड एरिया डेवलपमेंट ऑल दोस थिंग्स दैट इज देयर. सिंपल कथा ग्रीन रेवोल्यूशन रो मीनिंग होची कोन जेतोला हमें ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन से जो स्टेप ता में नहीं थिलु बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स बाय यूजिंग माने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बट वी हैव ended with
we have increased our food productions many fold. बहुत उड़े हमें माने drastic increase हला food production. That was the माने green revolution. Of green revolution हबा फलरे there were two things. There are certain positives and certain negatives. Okay. Overcome the food crisis. Yes. तो किछि positives थिला किछि negatives थिला. So positives को हमें और negatives को हमें different heading रे पढ़ू. That was clearly mentioned in the syllabus itself. Jadi if you go by the syllabus, jadi गोटे देखिया चेष्टा करिवे. See, it was there agriculture रे. What is this? This is a green revolution and its socio-economic and ecological implications. When it is asking about socio-economic and ecological implications, the implications are always positive and negative. So agency से पचार मैंने हम कोर्स रे exactly we have read what they have asked. They have asked the same thing. Describe the implication of using a higher dose of fertilizers. Why they told like higher dose of fertilizer? Because the green revolution ro part thila hochi high yielding seed. Our high yielding seed ro basic requirement hochi it requires high dose of fertilizers and high supply of canal irrigation. Not exactly canal irrigation, a irrigation facility. So in general, we think in our mind that irrigation or canal irrigation should be there in a better way. Okay. So that was they have asked a follower that impact kon padla human health upre, environment upre. That is clearly mentioned on the syllabus itself. So a jinsa ta jota me syllabus re mention achi taku hi se ticket twist करके पचारछि. Okay. If you have a understanding regarding the topic, exam re bhi you will be able to understand what the examiner is exactly asking to you. Okay. Next, give an account of influence of topography on the development of the rail transport in India. Discuss the role of economic development in the country. Its role in its economic development. A direct syllabus ro question. Syllabus re kote directly inside लिखाइछि road, railways, waterways, airways, pipeline network, and their contemporary role in the regional development. Okay. तो से भितर कौन पचाछि रेलवेज कथा पचाछि रेलवेज को भी एक्सटेंसिवली हमें जनरली कवर करू बहुत समय कौन करे ए यार क्वेश्चन पचार तीटा वे अछि इधर से कौन करिवो रोडवेज बा रेलवेज को अलगा करके 60 मार्कर रे पचारि पारे दे कैन गो फॉर ए सिंगल क्वेश्चन अदरवाइज दे विल क्लब ईच एवरी हेडिंग ए सब को क्लब करके कौन पचारिवो दे विल आस्क लाइक ए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ओके So multimodal connectivity network in India and their implications on the contemporary or their contemporary role in the regional development. They can ask the question in both the way. While discussing, we have already discussed this particular question in this angle itself. Okay. So the class re jodi thik se apan attentive thibe and you have that minimum understanding, these questions you can attend. Okay. So next. Coming to the section B, जो first thing that question आसे अपन को you have to attempt 3 questions. जोटा कि increasing aging population in India. Direct question थिला because see you go by this तो ए जगह रे गोटे जिंस अछि if you go this is the thing where it is there demographic attribute रे first अछि sex ratio age structure this is the age structure तो age structure रे माने केमती माने हमरो जो it is there माने workforce केमती dependent population केमती we have dealt with all those things मु कहि भी नहीं जे aging population exactly कोई कि we have dealt with a 20 marker but when you encounter this type of question that is also a writing skill सेटा आपण गोटे writing skill रे जाय how you will start with the known things and you will conclude with the appropriate माने जो question रे जो topic ता पचे you have to mold your answer towards that. So see age the population upre exactly 60 marker you may not have readily available. You can go with the 20 marker 20 marker लिखि परियो जदि आपण non geographical माने context आपण लो to start करियो जदि आपण government schemes कोन तार implications हे पारे बा changing demography and a report परिबे but that will not give you exact geographic perspective. जदि start करिवे normally गोटे से age structure upru and then you are able to take the answer towards the aging population, it will be a very nice flow of answer that will fetch you good marks. Okay. So that's why the question astuchi, the question while you are reading the question in the examination, when you have an understanding towards the syllabus and each topic, you should be able to track the questions towards the topic of the syllabus. Question that is very important. Okay.
एटा पचातला नेक्स्ट पचातला इट इज अ वेरी माने ए जिंस तो ऑब्वियसली कहार क्लास रे डिस्कस करा नथियो बिकॉज़ इट इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जेंति भुवनेश्वर आ चंडीगढ़ ऊपर तार प्लांट सिटी रो डिस्टिंग्विश पचारछि तो दी टाइप सिटी विषय रे टिके आईडिया थिबा दरकार तो जनरली भुवनेश्वर विषय रे हमको आईडिया थिबो बट मे नॉट एवरीवन मे नॉट हैव an idea towards the Chandigarh plant city. So this question you can skip, no issues on that one. Next, Kalapani border dispute thila, eta direct question thila because ei jinsota exactly ame mane moro notes re hi thila. I have shared my notes and there it was there. Okay. So eta kote aschi political aspect. So edi gote achi international boundary of India and related issues. So ei question ta thila sei particular part to. You have to simply have to draw a map of India. So India Kalapani ro kemti. Eta to normal GS question bhi you can tell like that. Then stubble burning in North India. So obviously stubble burning in North India to direct question nothila, mane direct syllabus re nothila because if you go by the syllabus, the syllabus re kon achi contemporary issues achi. Aw eta hochi contemporary issues ro kon jodi apon dekhibe ei jaga re gote thibo pollution. There is this is the issues related to the environment pollution. So this question was asked from that, and if you believe we had a test mane jo mu kohtil writing practice. So writing practice में मोटे question पच्चीस थी मध्य. This is the question I have given in the writing practice. What is an air pollution? Give a brief account on the impact of stubble burning and its possible solution. This was a question from our test series. Okay. Next, describe the concept of COVID-19 and related reverse migrations and its impact on the rural areas and the special reference to Odisha. See, 8 type of questions जति कथा कहिबे तो exactly पूरा एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करथिलु इट विल बी अ बोकस कमिटमेंट इट वाज नॉट लाइक दैट बट सी माइग्रेशन गोटे जिंस जोटा हमें पढिथिलु माने कोर्स रे ही थिला हमें कोर्स हमें पढिथिलु व्हाट इज माइग्रेशन रो टाइप अछि जेमति कि इंटर रीजनल इंट्रा रीजनल और इंटरनेशनल तो हियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द माने जो कहना थी कि रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करंट अफेयर्स टू द सब्जेक्ट दैट इज द रिक्वायरमेंट जेमति कि रिवर्स माइग्रेशन ऊपर समस्त को आईडिया अछि तो इंडिया माने ओडिसा कथा को सब हम जानछु सूरत रे गोटे मैक्सिमम माइग्रेशन अछि यू कैन टेक ए केस स्टडी कि माने ओडिसा रे केमति पॉपुलेशन सूरत को मैक्सिमम माइग्रेट करथांती इन सर्च ऑफ जो हमें कहूछु डिफरेंट नॉन फॉर्मल सेक्टर वर्क तो जतबे कोविड आसिला केमति रिवर्स माइग्रेशन हला तो नॉट ओनली योर सूरत इवन सूरत छाड़ी कि आउ भी किछि एरिया अछि इवन माने गोटे इंडिया मैप करी कि मोर नोट्स भी थिला आई हैव शेयर्ड जतबे माने लास्ट 2020 मु जतबे मेंस दोथि तो मु भी निज पई से एटा करिथिली तो यू कैन रिलेट इट इन दैट वे एंड यू कैन राइट इट ओके तो इट वाज लाइक दैट नेक्स्ट इज देखिबे व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ स्लम एनालाइज द ग्रोथ ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इन द लास्ट 2 डिकेड्स तो स्लम विषय रे हमें डिटेल पढू माने सिलेबस रे अछि त हमें पढू एनालाइज द ग्रोथ ऑफ मिलियन सिटीज तो एडा भी गोटे सिलेबस रे अछि मिलियन टाइप ऑफ सिटीज डेवलपमेंट हमें कहूछु तो एडे जे देखिए स्लम्स एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स टाउन प्लानिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन लाइक एडे थिबो कन्वर्जेशंस एंड द मेट्रोपॉलिटन रीजन तो ए दिस क्वेश्चन इट वाज मर्ज्ड एंड आस्क्ड इन दैट वे ओके तो इट्स नॉट लाइक कि यदि आपण पढी चंदे एंड यू डोंट हैव कंटेंट टू राइट ओके द थिंग इज लाइक you in the examination because they're changing the pattern and they're going towards more dynamic type of question framing you have to prepare yourself in that way ki ha dynamic question asyo and I'll try mane tackle it that will improve kemti improve kariya because once understanding is there then I mean all writing practice kariya we are going to frame dynamic questions okay next is discuss the concept of integrated watershed management critically examine the government initiatives for the development of backward area in India it's direct question एटा पूरा माने नोट्स रे ही अछि आ पूरा सिलेबस रे ही मेंशन अछि इफ यू गो दिस वे ए लिखाई थिबो watershed management okay and development of backward area see planning for the backward area so backward area jeta planning korchu in that notes itself we have given some n number of Indian government initiatives and the hostel koruchi lead banks formation koruchi lot of contemporary examples also we have given okay so this was the pattern of question jota ki this is the paper 2 and the paper 2 was considered to be tough then you should have your understanding ki ha question kemti ase au kemti pila mane how we are decoding the questions to be tough or simple or easy
So based on the, what you can say, it's whether it is directly asked from the syllabus or it is gone into a little application based. बुझी पारले questions माने OPSC बर्तन केमती frame करूची. So before going to the topic, if anyone having any doubt, obviously we will not like waste lot of time. At least one topic will complete, and I have to make you clear. First, हमें human geography of paper 1 and paper 2 we are going to wind up. Then we are going to shift towards the paper 1 and paper 2 physical part, because physical part what I expect everyone has a little bit of understanding, and the human geography is little it's new to us. Okay, if I am not wrong, anyone having any difficulty regarding the approach towards our course, then also you can just let me know. The human geography start kale, anyone having any problem, but that is my commitment. You won't face any problem while dealing with the human geography. If at all you are going to encounter any sort of concept and anything that you don't have any background knowledge, then I'll make you clear. Then we'll go to start that topic. Okay. Anyone having any doubt? Otherwise, we'll go to the topic. Okay, I expect this. So we'll start with the first. We'll deal with this economic geography. Okay. Then we'll go to other chapters. I'll tell you what are the chapters we are going to start. First, we are going to complete the economic geography. Okay. Just give me 1 second. I'll be back. Okay. So first time I deal kariya energy crisis. Okay. So there is a topic. It is energy crisis. Why I'm starting in between? Because see, we are not going to deal from MD Goriki. We are not going to start. What I feel this year, these topics are more important. Then in that chapter, I'm going to start with those topics first. Then we'll go to the different topics, and we are not like economic geography or next chapter we are going to jump. Not like that. We're going to start the important topics of that particular chapter first. Then we'll cover remaining topics, and then we will go to the next chapter. Okay, our approach should be like that. So energy crisis, mind my word, this is common in both paper 1 and paper 2. Jadi paper 2 re apan dekhibe, in the resources the same topic is there. It is energy crisis. Au kote jinsa say jo bhi topic ho, जो भी टॉपिक हो जेतबळे if it is common in the paper 1 and paper 2, then your approach should be it's a like holistic way of studying. Jodi paper 1 re madhya energy crisis OPC pacharche, how they have asked, they have interlinked the question, and they have asked what is energy crisis and implications of the energy crisis with respect to the Indian scenario. They are not going to ask energy crisis and write down the energy crisis with respect to America. It is an irrelevant question, because you are giving an examination that is completely that is with respect to our own country, our own problems. If it is possible, even they can go downward
they can ask with respect to Odisha also. GS class aji nahi, aji optional class chalchi. Okay, so with energy crisis we are going to start. So when energy crisis, some questions is asked. Suppose now it is energy crisis. What we are going to start? We are going to start with a definition. So what is the definition? Any significant bottleneck in the supply of the energy resource to an economy, it is the energy crisis. Okay. So ए भितरे बुझाउ चेष्टा करन bottleneck रो अर्थ कोन होची? किछि टाइप रो hindrance, okay, किछि टाइप रो obstruction, किछि टाइप रो एमति किछि significant hindrance आसी गला जोटा कि एनर्जी रो अर्थ कोन बुझुचंती? एनर्जी रो अर्थ होची इधर से किछि कोल हो, पेट्रोलियम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ए सब होची एनर्जी. आकु जदी इकोनॉमी रे पहुंचेबा को कोनोसी प्रकार एमति किछि ऑब्स्टकल्स आसुची, देन इट इज नोन एज एनर्जी क्राइसिस. जेमति कि एग्जांपल आज काल रे न्यूज रे आपण देखिथिबे बर्तन जो ड्राइवर संगर जो माने हड़ताल चलची ता फल रे इफ यू हैव विजिटेड टू द पेट्रोल बंक्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस देयर इज अ शॉर्टेज इन द फ्यूल सप्लाई. ओके, हाँ, पेट्रोल प्राइसेस जहाँ भी, इट्स नॉट ए आमे ऑब्वियसली आपको गोटे एनर्जी क्राइसिस तो कहिबानी, बिकॉज एनर्जी क्राइसिस फर्स्ट इट वाज रिटन इट इज ए सिग्निफिकेंट बोटलनेक. जदी ए जिंसटा जदी गोटे मास तमाम हे जानता, 15 दिन हे जानता, पूरा इकोनॉमी गोटे डिसरप्शन स्टार्ट थांता, इट इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन नो डाउट, बट इट इज नॉट ए एनर्जी क्राइसिस. ओके, तो एनर्जी कोन कहूछु? एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पावर. So end of the day, we need certain power to perform our day-to-day work. So power आमे कोठु पाउछु? एनर्जी टू पाउछु. ओके, तो क्राइसिस केते बडा आछे? जदि सिंपल भाषा आमे बुझाउ चेष्टा करछु, when demand is more compared to the supply, then it is called a crisis situation. But this crisis should be in a significant way. सब बडे मन रखिए, this significant, it is more important, it is a critical word in this definition. Okay, so what are the causes? तो को we experience an energy crisis. The causes can be of from different types. जेमति कि demand side रो गोटे cause हे पारे, supply side रो किछि cause हे पारे, even there are some other causes are there. Coming with the demand side, जेतोला हम देखु over consumption हे गला. Now suppose you consider a situation जोटी गोटे economy को, गोटे market को 100 liter oil supply होउची, all of a sudden सेई एरिया रे बर्तन गाड़ी बढ़ी गला. नाउ द कंजम्पशन हैज गॉन इनटू 120 लीटर्स. सो नाउ देयर इज ए बॉटलनेक कि आउ किछि लोकन को ऑयल मिलिबो नाही. इन दैट केस आल्सो इट मे लीड टू द क्राइसिस सिचुएशन. ओवर पॉपुलेशन, सिमिलरली जदी सपोज कोटे एरिया रे किछि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराउची, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज कांस्टेंट, नाउ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज्ड. सो ए केस रे हमें कोन कहिबा? देयर इज ए क्राइसिस लाइक सिचुएशन. क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जेतोले किछि समय आपण देखिथिबे, एबे सपोज नाउ सपोज पीक समर आसी गला बर्तन, तो पीक समर रे देखिथिबे सब बोले राति रे जदी किछि अप्लायंसेस चलांती, मे बी यू मे नॉट गेट द प्रॉपर पावर. समटाइम एसी ऑन करा पे जिबे स्टेबलाइजर रे सप्लाई आसु नथियो, बिकॉज़ व्हाई? देयर इज ए बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट एक्सट्रीम हॉट सिचुएशन आछी, तो मैक्सिमम लोकंकर अप्लायंसेस यूसेज स्पेशली एसी यूज करिया बढ़ी जाय. तो सिमिलरली जेतोला हम बहुत अधिक ठंडा पड़ुची, तो आमे कोन करछु? रूम हीटर सिस्टम्स यूज करूछु, वाटर हीटर यूज करूछु, but other things. So climate extremes also sometimes requires more power consumption. Okay. Next, this is the demand side. Coming to next, the supply side जदि हमें देखिबा, तो सप्लाई साइड जदि हमें देखिबा, कोटे होची सैंक्शंस. जेमति कि एबे देखिबे जो रशिया और यूक्रेन जो क्राइसिस लागि, माने जो भी माने वॉर चले छी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो रशिया ऊपर बहुत सैंक्शंस लागि छी. बहुत टाइम देखिबे इंडिया रे क्रिटिसिज्म होतो फॉरेन फोरम रे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स को ये करंती, इंडिया इज बाइंग द रशियन ऑयल बिकॉज़ देयर आर सम वेस्टर्न कंट्रीज हैज इंपोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया, बिकॉज़ रशिया एग्रेशंस देखैची, वर्ल्ड रो जो गोटे ट्रैंक्विलिटी पीस अछि ताकू से हिंडर करछि एक्सवाइजेड जिंस. ओके, तो जदि किछि टाइप रो सैंक्शन लागुची, सपोज रशिया ऊपर बर्तन सैंक्शंस लगे दिछन, किबा इराक ऊपर सैंक्शन लागि जाउची, ईरान ऊपर सैंक्शन लगे दुचंती, ईरान ऊपर सैंक्शन लगा है बहुत दिन होला, तापर कोन छी ईरान रो इंडिया ऑयल किनि प्रॉब्लम. So it is obviously, see, you have to understand proximity of a country is also important. Wherever it is, logistic is there. Jadi suppose this is India, this is your suppose Iran, and suppose आमे जदि देखिबा this is your USA. तो USA रो किछि ऑयल इंडिया आनिबो और ईरान रो किछि ऑयल इंडिया आनिबो. तो as far as logistic cost माने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कंसर्न, तो कोटा कम पड़िबो इंडिया को, जदि इंडिया इज ब्रिंगिंग ऑयल फ्रॉम ईरान.
एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़िबो द्वितीय कथा होची कोन हमको टाइम भी कम लागिबो तो हमर जो मैन पावर इन्वेस्ट होची merchant navy is there they are responsible for the bringing this logistic oil and everything okay तो से मानन को भी सेति की समय वर्क करिया को पड़ुची ना they have to bring a oil from USA it is too far away from India is concerned okay तो सही सब जिंस भी देखिया को पड़िबो so based on that sanction is something that also may lead to a crisis like situation ओभर एक्सप्लॉइटेशन जति कहूचे कोनोसी गोटे सपोज ईरान कथा कहूचे तो ईरान पाखे रिसोर्सेस अछि से केवल बहुत अधिक एक्सप्लॉइट करतला से रिसोर्सेस नाउ एट द पॉइंट विल कम बिकॉज़ ए सब जिंस कोन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो गोटे पॉइंट रे से रिसोर्सेस कंप्लीटली एग्जॉस्ट ही हे गला सरी गला तो नाउ वी हैव टू गो टू द अदर ऑप्शंस पॉसिबल तो से केस रे कोन होची गोटे पर्टिकुलर सपोज 10टा कंट्री अछि जो ओपेक कंट्री सुनिथि आपण जो माने ऑयल सप्लाई करंती यदि गोटे ओपेक कंट्री ऊपर माने तार जति रिसोर्सेस खत्म हे गला बर्तन तार जो बर्डन ता थिला सी जति की सप्लाई करथला सेटा बर्तन अन्य कंट्री ऊपर को शिफ्ट हे जो अन्य सप्लाइंग कंट्रीज ऊपर को शिफ्ट हे जो दैट मे आल्सो लीड टू ए सिचुएशन क्राइसिस लाइक सिचुएशन एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज जो पाइपलाइंस रे हम यूज करछु किबा जो शिप्स को हम यूज करछु आनिया पई इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मशीनरीज यूज करछन ऑयल को एक्सट्रैक्ट करिया पई तो दैट इफ इट इज एजिंग तार कोन होचे एफिशिएंसी कमी जिवो so that may also lead to the less productions of oil or less production of energy this may be a cause for the energy crisis government policy change माने कोन suppose एबे हमें import हमें बडल देखु import cost हमें बढ़ाई दोछु suppose किछि import cost बढ़ी गला बर्तन तो से पर्टिकुलर कमोडिटी रो प्राइस बर्तन बढ़ी जिवो से कमोडिटी जतले प्राइस बढ़ियो तो मार्केट रे गोटे डिमांड एंड सप्लाई रे गोटे जो बैलेंस थिला that is going to have a disruption so that may also lead to a crisis like situation political crisis माने जो war type situation हला that is also a part of political crisis OPEC जो अछि जदि OPEC जो माने आको हम कोन कहू ऑयल कार्टेल कहू ओके ए माने कोन कहू एवाडो जो ऑयल मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो माने तांको हिसाब दाम को फिक्स करू ओके जदि ए माने बेले बेले सुनिथिबे OPEC कंट्रीज कोन कहते ऑल ऑफ अ सडन प्राइस बढ़े दोचन किबा से माने तांकर सप्लाई को कट कर दोचन काहे कि बिकॉज़ see it is a market that is driven on the supply and demand जदि demand constant अछि supply को कमे देली आपे आपे that product is going to माने it is going to more expensive okay that may also leads to a like crisis like situation तो ए सब supply side रो हे पारे these are the demand side अदर ताकू छाडले कोन हे पारे जंती वॉर बा अटैक किछि होची जा फल कि किछि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अछि ता ऊपर अटैक हे गला बर्तन they are not in a position to going to supply maybe जो पाइपलाइन देके आछि से पाइपलाइन ऊपर किछि अटैक हे गला से पाइपलाइन माने डिस्टर्ब हे गला किबा इवन माने किछि टाइप रो अदर सिचुएशन किछि भी हे पारे कि माने ब्लॉकेड के कर देला माने हमें जो कहूछु हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म मलाक्का डायलेमा कि मलाक्का डायलेमा कहि कि वर्ड सुनछन यस सर नो नो सर नो सर केबे मलाक्का स्ट्रेट वाली गोटे स्ट्रेट अछि मलाक्का स्ट्रेट रे जोटा हुए तो हां मलाक्का स्ट्रेट वाली गोटे जान सी हां यस जदि अपन इंडिया देखिबे श्रीलंका भीतर रे ना इंडिया श्रीलंका मालयशिया हां दिस इज योर मलेशिया एंड दिस इज योर इंडोनेशिया ओके तो मलेशिया इंडोनेशिया भीतर देखि गोटे हां इंडोनेशिया ए भीतर देखि गोटे छोटो गोटे एमती गोटे पैसेज अछि ए स्टेट टाकू ना स्टेट माने कोन दीटा बड़ बड़ कंट्री भीतर माने दीटा बड़ बड़ लैंड मास भीतर गोटे छोटो वाटर बॉडी दीटा बड़ वाटर बॉडी को कनेक्ट करथबो ताकू में स्टेट एटा सर लिंकेज टू द साउथ चाइना सी तो जो रूट ता हां तो जनरली एटा को मैं स्टेट्स कहूछु तो एमती गोटे मलाक्का स्टेट अछि दैट आई विल शो यू इन द मैप सम अदर डे तो ए स्टेट देखि कोन हुए जो चाइना रू माने चाइना रो जो इंपोर्टेंट पोर्ट्स गुडा अछि हांगकांग पोर्ट हला बा अदर पोर्ट्स हला तो संघाई पोर्ट्स हला तो ए पोर्ट जो शिपिंग तांको बाहरे ए मलाक्का देकी इंडियन ओशियन एमती हे कि ता ऑयल पई जाय ओके दिस इज द नॉर्मल रूटिंग तो ए पाखरे जो मलाक्का अछि ए पाखरे हम इंडिया रो कोन अछि एडिया हम अछि पोर्ट ब्लेयर माने अंडमान निकोबार अछि आ इफ यू हैव एवर हम आईडिया पोर्ट ब्लेयर इंडिया रो गोटे ट्राई सर्विस कमांड अछि ओके तो इंडिया रो प्रॉक्सिमिटी टू द मलाक्का इज वेरी क्लोज
India in a proximity to the Malacca. तो इंडिया जदि चाहिबो ए मलाक्का जो सी रूट अछि ताको ब्लॉक करि परिबो. Okay, if it is blocked by your Indian Navy or other forces, then जो चाइना रो जो शिपमेंट गुडा को जाउची that will be blocked. How you better know by this time कि energy बा ए जो fuel कथा कहूछु, this is the most vital thing to run an economy, especially a developing economy like China. तो ए जो गोटे डायलेमा अछि ना कि केतबेले बंद कर दबो. तो सी यू हैव सीन कि चाइना बहुत टाइम एग्रेसिव हे जा अन्य कंट्रीज ऊपर इवन ऑन इंडिया, बट एग्रेशन गोटे लिमिट अछि. बियॉन्ड दैट चाइना इज नॉट गोइंग बिकॉज़ चाइना हैज स्टिल डिपेंडेंसी ऑन दिस रूट. सेथि पई से मलाक्का डायलेमा को ओवरकम करिया पे दे आर गोइंग फॉर द सी पैक. बंतोटारे सर सर ये मल्लाका कौन कहले? डायलेमा को ओवरकम करिया पे हबनतोटारे ए जो श्रीलंका रे जो पोर्ट बनौची हाँ. ऑयल टैंकर रखिया पे Yes, कि yes. नहीं एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट इज द काउंटर जो हम कहउछु ते माने विल सी दैट जे तो हम जो कहउछु इंडिया को से एनसर्कल करिया को चाहूची तो गोटे टाइप रो बुझो ना काउंटर डिप्लोमेसी ताको कहंती. ओके, तो इंडिया डिप्लोमेसी करूची तो से माने गोटे काउंटर डिप्लोमेसी करचंती. तो इट इज ए सी इन आज डेट ना इंडिया चाइना जो टाइप रो इकोनॉमी रे स्टैंड करचंती दैट इज डायरेक्ट वॉर इज नॉट पॉसिबल. से बुझो ना जो डरेवा वाला सिस्टम इंडिया ताको गोटे किछि जिंस डरेबो से इंडिया पे is it possible कि इंडिया काली को 17 को ब्लॉक करि परियो? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ इंडिया जदी ब्लॉक करियो इंडिया बहुत गुडे फ्रंट रू से चाइना अटैक करिया स्टार्ट करबो इंडिया को. दैट विल गोइंग टू हैव ए लाइक वेरी ड्रास्टिक लॉस टू द इकोनॉमी. ठीक अछि, हम बंटोटा से सु जिंस भी हमें देखियो जेतो हमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखियो ना. तो माने इंडिया चाइना गोटे माने हमरो गोटे टॉपिक ही अछि दैट इज माने इंडियन ओशियन रीजन रो गोटे दैट्स ए टॉपिक वी विल गोइंग टू डील इन डिटेल. ओके, तो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो पॉलिटिकल क्राइसिस जो कथा कहू. हां सर पोर्ट ब्लेज तो War किसी and भी सर attack. डिसीजन काउंटर अटैक करे सर बाय सर बाय डायरेक्टिविटी सर बहुत माने मेन प्रॉब्लम हो जोटा कि बहुत लॉसेस हो ए सर मेन कॉजेस से परिबो. हां, तो जेते पय मु सर एग्जैक्टली अपन पूरा आंसर ता सुनी पालेनी कोन कहिले. सर बाय डायरेक्टिविटी सर बहुत हेमंत माने अपन वॉइस टी कट होछ. ओके सर हाँ, yes, that is what because यदि माने कौनसी yes that is the impact जे को तो यदि हां सर इंडिया में हाँ, पॉलिसी हाँ, कर सर हम ए माने कमिंग फ्यूचर रे सर कमिंग फ्यूचर रे सर सेडी गुडे माने टाइप करबो जदी शिप जोटा मूवमेंट करूची सेडी रेस्ट करबो जोटा कि माने काउंटर को बेटरली से करि परिबो जो स्टेट ऑफ मलाका रे. तो सर सर बाय डाइवर्सिटी सर गोटे मेन प्रॉब्लम हो जोटा कि पोर्ट वेयर जो आपण कहले से सर गोटे हे परिबो. हां yes ठीक yes you are right. ओके सर. तो दैट वाज द थिंग जेमते हमें सप्लाई करता रे कि हां वॉर एंड अटैक हमें देखिले तापर मार्केट मैनिपुलेशन कथा भी हमें पूछे. तो मार्केट मैनिपुलेशन माने सपोज हमें जो कुछ होर्डिंग करछो कि माने काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग. तो बहुत टाइम देखिथिबे माने बेले हुए ना कि राति बार एबे तो एते होउनी इंटरनेशनल मार्केट से. तो नले आगु जो गवर्नमेंट जेते बेले प्राइस को रेगुलेट करथला पेट्रोल डीजल प्राइस रो राति 12टा रु काली सकाळो पेट्रोल प्राइस बढ़िबो. तो पेट्रोल पंप वाला कौन करते ना कहते हम पाखे पेट्रोल सरी गला बिकॉज राति रे आपण जे 12टा पूर्व पेट्रोल पके देबे तो यू आर गोइंग टू हैव ए चीप माने पेट्रोल. तो सेही जिंस को से माने होर्डिंग कर दियंती. तो दैट इज मार्केट मैनिपुलेशन. ओके, तापर नेचुरल कैलेमिटीज किछि कैलेमिटीज आछी तापर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाउची सी रूट ब्लॉक हो जाउची दैट कैन आल्सो हैव ए सप्लाई प्रॉब्लम. तो दोज आर द कॉजेस. हमें ब्रॉडली आको डिवाइड करछु. तो एमती ही जदी कॉजेस को सपोज ए सेम क्वेश्चन आपण ओटे छोटो मार्कर हिसाब पछे देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. यू आर नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट. यू कैन जस्ट ड्रॉ ए like this like hub and spoke type energy crisis what could be the causes and the political causes and the point de dele even you can put it into the box then small 1 2 3 empty करके bullet points लिखि देबे. so that can be possible. then the coup कथा कहला attacks कथा कहला infrastructure damage कथा cross consumptions कथा over consumptions जो कथा कहले over exploitations कथा ही परिबो industrial माने industrial actions कथा. तो these are the points. okay, that are the cause of the माने this energy crisis. तो cause तो हमें पढ़िले cause पर हमें जदी bottlenecks को देखिबा ताकू छाडला पर bottlenecks कोन ही पारे आउ कोन ही पारे.
माने सप्लाई ठीक अछि बर्तन बट आमो भितरे कोन गोटे बॉटलनेक्स आसिला जा फर फिर भी हमें क्राइसिस को एनकाउंटर करछु सो दैट मे बी रिफाइनरीज सपोज हम पाखे हमें जो इफ यू नो कि हमें डीजल पेट्रोल तो इंपोर्ट करूने व्हाट वी आर इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल्स तो क्रूड ऑयल्स को इंडिया कौन करे रिफाइनरिंग करे और रिफाइन करे कि इंडिया इज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड ऑयल माने रिफाइनरिंग हला परे इंडिया गोटे एक्सपोर्टर मेजर एक्सपोर्टर अछि the only thing is crude oil we are importing a lot okay तो suppose refineries नहीं adequately तो हे परुनी पोर्ट्स जदि ठीक से नहीं ठीक भाबरे पोर्ट एक इक्वल माने गुड अमाउंट ऑफ पोर्ट नहीं तो बारंबार सुनथिबे किछि मेजर पोर्ट्स गुडा अछि जो गुडा ऑयल इंपोर्ट हुए कंटीन्यूअसली जेंति गुजरात पोर्ट मुंबई पोर्ट तो ये पोर्ट गुडा ओवरलोड हो जाउछि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रे दैट मे बी ए प्रॉब्लम पुअर डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट को तो आसीगला बर्तन पोर्ट सपोज रे आई एम इन मलकानगिरी तो मलकानगिरी रे तो सेति की आसिया दरकार ना सपोज रोड इज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ so that transportation is also required so distribution is poor so that may also lead to a crisis like situation next infrastructure damage so already we have seen the tara example jemti koi pare Suez canal ro blockades if you have heard about this news some 1 year back 1.5 year back thila setole mane Suez canal re traffic jam heitla because there was a ever given koi gote sea thila jota mane sorry gote ship thila jota ki cross wind jogo ti tilt heitla से कोन करथले से जो नैरो पैसेज ता जो रहिला सुएज कैनाल रो ताकू से ब्लॉक कर देथिला ओके सो यू हैव सीन माने एडा वाटे टाइप रो एमति थिला एपोर्ट से जो रेड डॉट्स यू आर सीइंग दीस आर द शिप्स जो गोडा को ट्रैफिक जाम ही जायछंती तो सुएज कैनाल गोटे इंपोर्टेंट माने ट्रांजिट ट्रेड रूट जोटा की एशिया और यूरोप को कनेक्ट करची इवन सम ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज ठीक अछि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जति देखिबा वी हैव सीन 1973 रे ओपेक कोन करथला से जानि सुनि कि तांकर प्राइस बढ़ी जेथिले आ से माने कर्टेल भी कर देथिले सप्लाई को तो दैट वाज लेड टू ए क्राइसिस लाइक सिचुएशन 1979 रे इरानियन रिवोल्यूशन आस्तिला से समय मध्य वॉर हितला इराक ईरान भितरे तो दैट वाज आल्सो प्रॉब्लम माने गोटे सेही टाइप रो सिचुएशन क्रिएट हितला 1990 रे गल्फ वॉर हितला because Gulf countries are the major producers of the oil that was led to some kind of this situation 2005 to 2008 रे जे देखिबा OPEC again they have cut the oil supply काहे कि ताको प्राइस को बढ़िया पाए डिमांड एंड सप्लाई थ्रू रे so it was like that 2015 जे देखिबे नेपाल रे गोटे क्राइसिस सिचुएशन हेतला एंड इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट वन माने बाय द टाइम 2015 पर्यंत कोन हेतला देखिबे नेपाल वाज ऑलवेज लाइक ए माने इंडिया रो गोटे ब्रदर टाइप रो ओके इंडिया हैविंग ए बिग ब्रदर attitude towards Nepal always okay तो गोटे पॉइंट आस्तिला जते बळे धीरे धीरे नेपाल रो गवर्नमेंट जते बळे चेंज हला तो दे हैव स्टार्टेड इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स चाइना तो ताकू काउंटर करिया पे इट्स लाइक इट माने हमें फोटो आई विल टीच यू एन लेसन काइंड ऑफ तो इंडिया जानि सुनि कि जेहेतु हिमालयन साइड तो किछि ताकू ट्रांजिट आसेनी एवरी ट्रांजिट टू द नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री दैट हैज टू गो बाय ट्रक्स एंड एवरीथिंग बाय रोडवेज और रेलवेज थ्रू इंडिया तो इंडिया जानि सुनि कि ब्लॉकेड क्रिएट कर दिछला just to teach Nepal relation so how important India is for the Nepal so that was created by India so India imposed the economic blockade okay this is economic blockade तापर 2021 से देखिए माने यूके रे गोटे नेचुरल गैस क्राइसिस हितला बर्तन कंटेम्पररी देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस दैट आल्सो लेड टू एनर्जी क्राइसिस लाइक सिचुएशन okay so these are the some of the examples coming to the mane current challenge for India mujhe jendi कहली जेतेबेले when we are going to deal with the common topics we are going to have a look on the Indian reference so India रे जदि हम देखिया जेमति कि coal supply problems जदि उठे कि देखिबा the last winter रे these are the problems India has faced जेमति कि power demand all of a sudden increase हेतला काहे कि increase हेतला because सेटा El Nino year थिला लानिना सॉरी इट वाज ए लानिना ईयर तो लानिना ईयर रे कोन होची कि विंटर ता सीवियर हे जाय सब पड़े तो विंटर सीवियर माने बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रूम हीटिंग अदर अप्लायंसेस यूसेज तो सेही टाइप रो तो पावर रो डिमांड बढ़ी थिला एटा गोटे रीजन थिला आ गोटे रीजन कोन थिला जो पोस्ट कोविड रो कहि दियन कहले आउथर जो लालिना ता कहिला आउथर टिके कहि दियन तो से কথা कहले कि लानिना ईयर रे कोन कि विंटर ता इंटेंस हे जाय माने विंटर रो इंटेंसिटी ता बढ़े जदी लास्ट आपण माने देखिबे विंटर वाज इंटेंस विंटर तो एटा गोटे जिंस जोटा के पावर सप्लाई रो डिमांड को बढ़ाए जेतोले हेवी विंटर रो जेतोले इंटेंसिटी ता बढ़िबो तो बिकॉज़ रूम हीटिंग
बहुत गुड अदर अप्लायंसेस गुडा को यूज होवा स्टार्ट हो तो जो डोमेस्टिक यूसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अछि सेटा बढ़े फर्स्ट जिंस द्वितीय कथा कोन जो आमे जे देखिबे माने लास्ट ईयर विंटर टाइम रे बा जस्ट लास्ट ईयर जते बेले जो पोस्ट कोविड रो जो हम माने इकोनॉमिक जो डाउनफॉल हितला तार रिकवरी पाई जो इंडस्ट्रीज गुडा को थिले तो से इंडस्ट्रीज गुडा को माने तांकर जो प्रोडक्शन रो जो कैपेसिटी थिला ताको मेनी फोल्ड बढ़ाई दिथिले बिकॉज़ ता बाहर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थिला मैन पावर्स थिले बट ऑल ऑफ अ सडन जस्ट टू रिकवर व्हाटएवर द लॉसेस दे हैव मेड ड्यूरिंग द कोविड रेस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग दे वांट टू रिकवर दैट विथ ए लाइक मोर प्रोडक्शन जेतोले प्रोडक्शन बढ़ेबे सेतोले तांको सब एनर्जी भी दरकार कोल रे भी दरकार तांको अदर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म रे भी दरकार सो दैट्स व्हाई द कोल सप्लाई वाज आल्सो इंक्रीज्ड जेतोले सेही समय रे ही कहला जो रेनी सीजन ता थिला इट वाज एक्सटेंडेड रेनी सीजन रे गोटे ड्राई स्पेल्स थिला कत थर आउ रेनी सीजन ता लेट रे स्टार्ट हितला किंतु इट वाज एक्सटेंडेड टिल नवंबर डिसेंबर नवंबर पर्यंत एंटर करथिला तो सेही समय रे जेतोले रेन अधिक होउची सेतोले कोन जो हम कोल माइंस गुडा छै इट वाज फ्लडेड विथ रेन तो फ्लड ही जायची कोल माइंस गुडा को सप्लाई अछि सप्लाई रो माने सॉरी डिमांड रो बहुत अधिक हाई ही जायची बट नाउ द सप्लाई वाज नॉट एबल टू मेट विथ द डिमांड so that led to the overall situation led to the coal supply crisis India re okay तो किछि जे देखिबा it was the current challenges for the माने India apart from that किछि जदी concerns थिला India पई जदी स्पेशली हमें फ्यूल को जदी कंसर्न रखी के देखिबा इन जनरल दिस इज माने कंटिन्यूइंग ऑलवेज ए प्रॉब्लम्स इंडिया से थाए कंसर्न्स थाए इंडिया होची फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर समटाइम्स इट गोस इनटू थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन यू कैन राइट बोथ no one is going to point out कि हम कहेंगे फोर्थ लिखितला कि ओके नेक्स्ट इज लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया रो निजर ऑयल प्रोडक्शन साइट्स बहुत लिमिटेड अछि जेमति कि आपण देखिबे जति किछि गुजरात रो जो कैम्बे बे रहिला सेठी किछि साइट्स अछि एबे रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड सर्टेन पॉइंट्स इन द राजस्थान रे जो क्रेन इंडिया करथिला मंगला सरस्वती सम साइट्स आर देयर बाणमेर वगैरह रे ओके नेक्स्ट किछि कावेरी बेसिन रे मिले आंध्र प्रदेश रे जो कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन्स अछि सेठी किछि मिले एडी ओडे बॉम्बे हाई अछि दैट वाज नॉट माने शोन ओवर हियर दामोदर रे किछि मिले अपर गंगा बेसिन रो उत्तर प्रदेश रे बहुत ही कम अमाउंट रे बट इट वाज देयर आउट फाइनली हमको अरुणाचल रे जो बेसिन रे सॉरी आसाम और अरुणाचल बेसिन रे जोटा हमें दिग्बोई वगैरह देखुछु सो दोज आर सम ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स दिस इज वेरी लिमिटेड माने इंडिया रो जो ऑयल डिमांड अछि दिस इज नॉट द 10% ऑफ द ऑयल डिमांड दैट इंडिया हैव सो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज वेरी लेस दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ओके नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी कंसर्न एबे भी देखिबे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी साइट्स अछि इट इज वेरी मच लिमिटेड हार्डली एजिटेटेड 7टा ऑपरेटिंग साइट्स ही अछि बिकॉज़ न्यूक्लियर एनर्जी रो सेफ्टी कंसर्न्स को नेके एबे भी गोटे माने इट इज इंडिया इज नॉट क्लियर अबाउट दैट कोस्टल सिटीज रे रखिया अछि एनर्जी रो माने न्यूक्लियर रो फ्यूल पाई भी इंडिया इज फाइटिंग बिकॉज़ इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यू आर अवेयर ऑफ दिस वन नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल रो अर्थ कोन जति सपोज इंडिया को बर्तन निजरो जो भी माने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी अछि ताको बढ़ेवार अछि सपोज वी आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी हला विंड एनर्जी हला अदर थिंग्स तो एडा गोटे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जोटी एते इन्वेस्टमेंट दरकार इंडिया इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ कि माने ऑल ऑफ अ सडन गीगावाट्स हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट थाउजेंड्स ऑफ गीगावाट आडू को शिफ्ट हे परिबो सो दैट इज आल्सो ए कंसर्न नेक्स्ट ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन शेयर रे माने ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन रे इंडिया रो किछि शेयर थाए माने सब कंट्री सेमती थाए एबे यदि केबे किछि मूवी वगैरह देखिथिबे किछि वेब सीरीज देखिथिबे तो इंडिया रो किछि देखिथिबे इंडिया रो किछि कंपनीज गुडा को किछि स्टेक रखिछन माने किछि हिस्सेदारी थाउची कोडी फॉरेन कंट्रीज गुडा जेमति कि इराक रे किछि अछि माने कि साउदी रे किछि अछि यूएई रे किछि अछि रशिया रे किछि अछि तो ए सब जिंस थाए जदि इंडिया रो गोटे डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंपनी गोटे अछि ओएनजीसी तार गोटे फॉरेन लिमिटेड गोटे ब्रांच बिच जोटा कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कहि कि नॉट ओनली दैट वन ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हां यस इवन रिलायंस रो अछि क्रेन एनर्जी रो अछि बहुत गुडे इंडियन कंपनीज रो अछि दे हैव सम स्टेक्स इन द फॉरेन मार्केट आल्सो ठीक अछि बट दैट इज वेरी माने वेरी लेस कंपेयर टू द माने सेते नाही जे इवन जदि फॉरेन कंट्रीज हमकु सप्लाई न करिवे बेस्ड ऑन द इंडियन शेयर आमे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को फुलफिल करबे इट इज नॉट लाइक दैट ओके these are certain concerns India have always with respect to
this माने जो fuel is concerned. This is we are dealing with respect to fuel. Again, concern with respect to electricity जदि देखिए इंडिया रे concern होची slow growth, the slow growth rate and large gestation period. Slow growth rate होची कोन माने जो भी हम पावर प्लांट it is not expanding. It is expanding in a very slow crawling rate माने बढ़ुची. Suppose एबे गोटे किछि नुआ गोटे कोल पावर प्लांट गोटे करियो तो इट्स नाइ कि आजि माने डिक्लेयर कला काली सेटा हे गला. It requires lot of time माने years together to complete that project itself. So এটা hydroelectric project तो even it will take further more time. जेमति कि आपण सुनते पोलाभरम प्रोजेक्ट maybe what मु जेबुटो छोटो अछि मु सुनि आछु पोलाभरम but still now it is under construction. Faulty planning कथा कहू जेमति कि न्यूक्लियर बा एटॉमिक किछि जो प्लांट्स गुडा को माने एमति किछि जगह रे भी कहू जे तार को ऑपरेटिंग को नेकी ता कंसर्न्स अछि लोकल सोसाइटी के प्रोटेस्ट करछु दे पर्यंत से माने ऑपरेशनल हे परनी तार सप्लाईज आसी करूनी माने जो न्यूक्लियर फ्यूल्स गुडा को सो दोज आर द फॉल्टी प्लानिंग्स कहतरी हम लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन माने गोटे सपोज प्लांट अछि तार कैपेसिटी होची सपोज 100 मेगावाट जनरेट करते आई एम गिविंग एन एग्जांपल but in general if you have ever visited to any power plant be it hydroelectric be it nuclear or thermal power plant सब बोले जदि के विजिट करि चंती then सब बोले पचरी देखि कैपेसिटी केते अछि से कहिबे जे xyz माने सपोज x मेगावाट but produce केते करूची hardly तार 20 या 30%. So that is called a low capacity utilization. Next is maintenance and operational problem. बहुत गुटे सुनिथिबे कि ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ता इंडिया यूके मिसई करचंती इंडिया फ्रांस मिसई करचंती इंडिया यूएस मिसई करचंती इंडिया रशिया मिसई करचंती आउ व्हाट वी आर डूइंग वी आर वेटिंग फॉर द देयर माने जो भी मेंटेनेंस इंजीनियर टू कम एंड दे विल मेंटेन एंड गिव सम सर्विस और अपग्रेडेशन टू आवर इंस्टॉल्ड फैसिलिटी जोटा के प्रॉब्लम सब बोले क्रिएट करे. नेक्स्ट सिस्टम एंड द ट्रांसमिशन लॉस सिस्टम लॉस एंड ट्रांसमिशन लॉस तो जतोले सुनथिबे जतोले वायर रे जतोले माने एक्स पॉइंट रु जो जनरेशन पॉइंट रु आमो घर पर्यंत जतोले सप्लाई होची जो वायर्स गुडा करे ताको केवी लाइंस बहुत नॉर्मल लैंग्वेज आपन सुनथिबे माने 33 केवी लाइन 11 केवी लाइन अदर केवी लाइंस तो एगुडा सब ने देखथिबे ए ओपन वायर था सील्डेड वायर नथे ता ऊपर कवर नथे गोटे नेकेड वायर गुडा सब देखथिबे सीधा आयरन वायर गुडा को माने स्टील वायर्स गुडा को तो जतोले ओपन माने वायर थाए तो जतोले इलेक्ट्रिसिटी पास हुए सेठी तो हीट जनरेट हुए और हीट फल रे किछि एनर्जी लॉस्ट हुए. ओके तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखिबा इंडिया एपीपी वाटर ट्रांसमिशन लॉस रे इंडिया बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांसमिशन लॉस कैटेगरी रे आसे इंडिया रो ट्रांसमिशन पार्ट रे एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ एनर्जी हम लूज कर दो सब. नेक्स्ट इज इंटरप्शन इन द फ्यूल सप्लाई जेमति मु आपन कहउतली कोल रो कथा जेमति कि फ्लड हे जायछि माने बर्तन सप्लाई करि परनांती से माइंस गुडा को इवन न्यूक्लियर सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल्स इंडिया को मिली पारु नाही. ओके अदर होजी कोन स्ट्रक्चरल चेंजेस रो अर्थ कोन जदोल देखिबे एबे जो गवर्नमेंट नुवा नुवा स्कीम सब नै के जे दीन दयाल उपाध्याय रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्कीम किबा किछि जो भी स्कीम्स गुडा को सपोज कोछन आपन से उज्ज्वला स्कीम से स्कीम रे कोन आमे बेनिफिशियरी तो बढ़ियार लागि छु किंतु हम पाखर कोन स्ट्रक्चर अछि कि हम पाखर ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेडेशन करा हि छि कि एबे देखिए सेही गोटे खंबो थिबो सेही गोटे पोलो थिबो सेहीटू माने केवीएल केसीएल लगेले सेती लगी परिबेनी सेहीटू 1000 टा वायर टणा हिथिबो तो सेही कैप माने जो ट्रांसफार्मर थिबो ट्रांसफार्मर रे ऑयल चेंज होनो थिबो नुवा ट्रांसफार्मर लगोनो थिए ता मेंटेनेंस होनो थिबो बट दे आर गिविंग लोड एंड लोड तो एसु जिंस कहू छि दीस आर द स्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन दैट इज रिक्वायर्ड बट बिकॉज ऑफ what we can say ill maintenance and other reasons we're not able to upgrade our structural efficiency. So those are the problems. ठीक अछि तो आकु माने मिटिगेट करिया पई कोन गवर्नमेंट स्टेप्स नै छि आजि पर्यंत कमिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट ओनली जेमति कि हम किछि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स करछु. स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स कोन माने एगुडा को जो देखुचंती दीज आर द स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जोटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अछि जोटा दैट इज गिवन इन द ग्रीन सॉरी ऑरेंज जोटा ब्लू अछि सेगुडा अछि अपकमिंग जोटा आसीबो जेमति कि कोन कोन अछि गोटे पादुर रे अछि मैंगलोर रे अछि विशाखापट्टनम रे अछि दैट इज ऑलरेडी देयर तार कैपेसिटी वगैरह देछि दिस इज नॉट दैट इंपोर्टेंट
you should remember ki Mangalore ta Karnataka re, Padur is Karnataka and Visakhapatnam is in Andhra Pradesh. Strategic oil reserve माने कोन किछि oil को आनि के हम already से reserve रे रखि देथिउ. It is just like a buffer reserve. एमती टाइप रो जो अप्रीतिकर परिस्थिति जे तमे कहउछ एनर्जी क्राइसिस लाइक सिचुएशन हेले आम निजरो ऑयल निजरो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को काढी के हम यूज करते एटलीस्ट किछि दिन पर्यंत हम चले पारे इकोनॉमी को. ओके तो these are there. अपकमिंग रिजर्व रे ऑब्वियसली गोटे इंडिया रे गोटे अछि जोटा कि माने ओडिसा रे गोटे अछि चंडीगढ़ दैट यू कैन रिमेंबर. ओके नेक्स्ट इंडिया किछि साउथ ईस्ट एशिया रे और रशिया रे किछि स्टेक्स एक्वायर करूछि जेमति कि वियतनाम अछि. तो वियतनाम रे ओएनजीसी बिजनेस लिमिटेड निजो किछि डिगिंग करा को चाहू माने किछि माने ऑयल साइट्स को एक्वायर करिया पे रशिया रो सैक्लेन एरिया रे इंडिया किछि स्टेक्स बढ़ुछि वर्तमान. So those are the planning for the either steps taken by government of India. किछि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स अछि जेमति कि तापी पाइपलाइन सुनिथिबे आईपीआई पाइपलाइन सुनिथिबे माने दिस इज तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया. आईपीआई होछि ईरान पाकिस्तान इंडिया. दिस आर द पाइपलाइंस. जदि पाइपलाइंस हे जिवो देन कोन ए मर्चेंट नेवी ऊपर डिपेंड करिया को पड़िबोनी. विदाउट द सी रूट we can directly access the petroleum or the crude oil through the pipelines. Nuclear deal जापान सहित ऑस्ट्रेलिया रशिया यूएसए ए सब कंट्रीज सहित करिके आमे कोन न्यूक्लियर फ्यूल पाई परछु सेमान होतु. इवन इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ हियर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो गुडा रहला जेंति सोलर एनर्जी विंड एनर्जी अदर जियोथर्मल एनर्जी ता ऊपर भी इंडिया is taking lot of steps. This is undoubtedly India is progressing in this particular direction quite well. At least India is a part of International Solar Alliance, not a part of it is a माने फाउंडर इंडियन माने फ्रांस. ओके देन सोलर पंप्स वगैरह गवर्नमेंट सब्सिडी दोची जेमति कि पीएम कोन सेटा पीएम कुसुम गोटे अछि तापरे आ ओडिसा रे गोटे अछि कोन जल निधि. So those are the some schemes under which India is giving subsidy to the farmers if they are going for the solar pumps. What a help project କରିଛି ମାନେ help project this is a full form होची हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशंस एंड लाइसेंसिंग. तो जनरली कोन हुए हाइड्रोकार्बन माने जने एक्सट्रैक्शंस कला बेल को किछि तांको पर रेस्ट्रिक्शंस लागि थाए दैट गवर्नमेंट इज ईजिंग ऑफ नाउ इट इज so as to माने facilitate those private company they will be more incentivized to go for more extractions. धीरे धीरे से माने अधिक माने प्रलोभित हेबे जे बेटर एक्सट्रैक्शंस करिवे सेही टाइप रो. बायोफ्यूल प्लांट्स वगैरह हमें माने इंडिया इज गोइंग टू एस्टैब्लिश जेमति कि बरगढ़ रे गोटे देखथिबे 2G इथानॉल कथा इवन 1G 2G 3G इस वो अछि इथानॉल ब्लाइंडिंग वगैरह भी इंडिया करूचे. तापे होची फेम मिशंस कथा जोटा कि फास्टर एडाप्टेशंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कथा हमें कोचु जोटा में सब्सिडी दोछु गवर्नमेंट माने इवन डिफरेंट नोटिफिकेशंस पा कोचे गवर्नमेंट ऑफिस रे electric vehicles to use करिवे by even government is giving subsidy to the customers and citizens. प्रकाश पोर्टल गोटे करा हिची जोटे जो कोल सप्लाई रो ट्रांसपेरेंसी टा को मेंटेन करिया पे बहुत समय कोन हुए कि बड़ बड़ इंडस्ट्रीज को तो कोल सप्लाई हे जे बट छोटो छोटो इंडस्ट्री को आसी पारे नहीं कोल को ताको. तो देयर इज अ ब्लैक मार्केटिंग दैट एग्जिस्ट. ए प्रकाश पोर्टल गोटे करा हिची जा फଳରେ कि इट विल एंश्योर the coals is supplied transparently and uninterruptedly to the destinations. Okay, so these are certain things. So it's I think हाँ को कहले फेम टा होचे कोन ए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बर्तन यूज करिया पे सरकार कोन करछि ना किछि माने कोन कहछि सब्सिडीज दोचंती. ओके बहुत गवर्नमेंट ऑफिस को भी दोछि गवर्नमेंट ऑफिस को तो सब्सिडी दोनी तो ऑब्वियसली दे आर गिविंग माने इंस्ट्रक्शंस प्राइवेट आमे जदी आपण जदी किनिबे किछि माने ई व्हीकल्स वगैरह कोन जदी देयर इज रजिस्ट्रेशन रो चार्ज वाइव ऑफ जाउछि we are getting some cashbacks माने गवर्नमेंट टू किछि सब्सिडी पाई जाउचंती if you are registering in a particular portal. So those are certain initiatives. हां ओम कोन सर फेम होची फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम इट इज बाय हेवी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज. सर आज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर करछन जे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सब्सिडी कथा. यस ओके आज डिक्लेयर हेची सेटा कहथले. ठीक अछि. सो दैट इज योर फेम. हां आउ कोन के पचटले सर सब पॉइंट गुडा को एक्सप्लेन करबो की
explain. I am making you should understand. देखो ए भितर गोटे थोड़ा सर प्लीज प्रोवाइड 2-3 लाइंस कौन कहले कौन के कहि कौन कहते माने जस्ट मु चाहू छी जे अपन बुझी जानतो जिंसटा सही जस्ट मगिंग अप द पॉइंट मे नॉट हेल्प यू इफ यू आर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि ए जिंसटा कोन तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन बुझी पाले ना एग्जाम रे जो भी नै जे एक्सप्लेन करिवा यस ओके तो एठू टिके आगु को अछि देन आई थिंक ओके दिस इज ओनली आगु किछ नै आई विल कंप्लीट दिस पॉसिबल सॉल्यूशन ऊपर आस्ते कि क्वेश्चन देखै परिबे कि हां आ ऊपर क्वेश्चन आसला एथर आसीनी आ ऊपर बहुत थोर क्वेश्चन आसी छै माने 2 to 3 टाइम्स दे ऑलरेडी आस्क्ड पेपर 1 रे भी पेपर 2 रे भी वो देखै देबी प्रीवियस क्वेश्चंस ओके थैंक यू सर ओके आई थिंक 2019 रे भी आस्थिला क्वेश्चन ऊपर एनर्जी क्राइसिस ऊपर ओके तो पॉसिबल सॉल्यूशन कोन हे परियो जेमति कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें यूज करिवा ताको अधिक अधिक प्रमोट करिवा ताफरे हम कोन इंटरनेशनल मार्केट ऊपर डिपेंडेंसी रहिबो नाही एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को हमें अधिक प्रमोट करिवा जेमति हमें कहूछु यू शुड गो फॉर द एलईडी बल्ब्स रादर देन द सीएफएल्स और द जो माने हैलोजन बल्ब्स ताको यूज न करी कि इवन जो हमें डिफरेंट होम अप्लायंसेस यूज करछन आपण देखते इलेक्ट्रिक सेविंग रेटिंग थाउची जो 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार सो दोस आर द एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स एनर्जी सिमुलेशन को भी हमें प्रमोट करते हैं व्हाट इज एनर्जी सिमुलेशन बिकॉज़ सी बराबर देखते इट्स ए हाईटेक थिंग जेमिति माने रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट अछि सही हिसाब रे से आपे आपे चेंज करिवो तार इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग सपोज नाउ यू आर स्लीपिंग यू डोंट नीड so it will be very like we say bomb visual light ta jeti apon you just relaxing or you don't need full intensity of the light it will be dim say single bulb hi thibo taro dimming taro intensity bodibo komibo it's like a thing I'm just giving a very simple energy simulation kemte it's a mane apon koi pari it's a AI technology artificial intelligence koi pari okay केबल्ड वायर मु जो आपन कोइतली ट्रांसमिशन लॉस होची इंडिया रे तो काहे की होची बिकॉज़ हमें ताकू ओपन वायर यूज करछु तो ओपन वायर जगह हमें जदी केबल्ड वायर को यूज करिए तो ट्रांसमिशन लॉस ता कमी पारिबो ओके नेक्स्ट होची एनर्जी ऑडिट तो सबु कंपनी बा सबु इंडिविजुअल इवन घर हो बा ऑफिसेस हो एनर्जी ऑडिट कले को हबो कि गोटे गोटे माने एनर्जी किछि हमें नॉर्मली ऑडिट काहे करछु कि एजेंसी देखिया पे ना किछि मिस एप्रोप्रिएशन हे गला किछि भूल रे खर्च करते लुकी तो दरकार नथला तो सेमित जिंसो कि आमे जानिया दरकार जे गोटे घरे सपोज 5 जण रहउचंती गोटे ऑफिस रे सपोज 10 टा सेक्शन चलची केते इलेक्ट्रिसिटी यूज हो दरकार और केते यूज होउची सो यू शुड बी एबल टू have you like okay this much extra electricity we are using we can reduce it so that is energy audit next is common standard on the climate change see एटा गोटे बहुत बड़ जिंस क्लाइमेट चेंज गोटे जिंस एटा जोटा कि एबे भी इंटरनेशनली देयर इज माने एकमत नांती बहुत जेंति कि ट्रम्प बहुत टाइम कहै छै इट इज अ मिथ समथिंग लाइक दिस तो जदी माने ऑल कंट्रीज विल कम टू द कॉमन प्लेटफॉर्म एंड एवरीवन विल एग्री ओके देयर इज अ क्राइसिस टुवर्ड्स दिस एनर्जी सॉरी क्लाइमेट then semane kon kariye they will going to contribute towards the energy jo ame कहउछु renewable energy आडू को funds mobilize हबो माने आमे माने energy efficient products आडू आमे अधिक move करिवा so that also a part of this next होची sustainable development approach तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जदि आमे कथा कहउछु तो आमे जेमति कहउछु कि इंडिविजुअल सपोज जणे गोटे कार ड्राइव करके ऑफिस को जाउची रादर ही कैन यूज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करले से गोटे फ्यूल रे नाउ 50% आर ट्रैवलिंग so that this is just an example of your sustainable development approach next हमें कोई पेरा political directions कौन पाई other R&D करी परिया कि other better products better जिनसे हमें बाहर करी परिया better efficiency हमें करी परिया waste to energy हमें बाहर करी परिया energy conservation obligations जेमति कि सरकार कौन करी परिया कि regulations बाहर करी परिया कि सबु companies ऊपर कि माने at the end of the year you have to submit कि मु एति की एनर्जी सेव कली केमति सेव कली माने जो भी माने एनर्जी सिमुलेशन कली एनर्जी ऑडिट कली रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कली बाकी चे रिन्यूएबल एनर्जी यूज कली तो लाइक दैट it should be obligations towards the industry towards the offices towards the individual also okay next is
हाउसहोल्ड कंजम्पशन जो हम निज घरे माने हम जो जिंस कहले सब तो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव लार्ज स्केल कंजम्पशंस कथा कहले बट एंड ऑफ द डे 130 140 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स आर देयर तो जदि हमें निजे ही कॉन्शियस ना हो कि सपोज गोटे रूम रो जाउ छथि से रूम रे फैन लागि छि बर्तन तो इट इज समथिंग आल्सो यू हैव टू बी कॉन्शियस because कोन कि if the attitudinal changes are not brought into picture then whatever the schemes whatever the approaches whatever the incentives are given by the government it will not work in a very efficient way so ei sabu jinso bisare this is the thing you have to write apart from that whatever it is given it is just an add on you can have a look on this not no need to remember the facts and figures just gote thora padhi debe just for you just you can it may add you some other points जो कहूत आपण explanations कथा explanations and everything is given over here you can go through once okay you'll get a because mu upre jo lekhi ji what I have written over here it is written in a very structural way jodi question ase how you are going to mane address to the question our approach in the examination should be like in this way if at all we have to expand this point we will expand in a just in a line not in a paragraph way okay so that you can use the time that is given for you like writing the answer should be utilized in a better way so I'll be sharing this PDF in your group so go through this so tomorrow we'll go to next topic okay ठीक अछि हां कोन सर आपण ऊपर जो स्ट्रक्चर वे रे लिखि छन्ते मन कर 10 मार्क रो क्वेश्चन आसिला आ हमें अटेम्प्ट कलु सही वे रे तो हमको एक्सप्लेनेशन ता एई पैटर्न हिसाब रे अवेलेबल करियो पड़ियो ना कोन नहीं जतो ऑब्वियसली 10 मार्कर अछि तो 5 पेजेस काहे लिखा पे से हिसाब कट करिवे ताको जेंति मु कहले डेफिनेशन ता लिखले कोड आ सेंति लिखले गोटे डायग्राम करके लिखि देले ओके किबा माने इंडिया रो कोन कोन ये अछि तो वी विल ट्राई टू माने इंप्लीमेंट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए वेरी शॉर्टकट मैनर तो सही जिनसटा ना राइटिंग प्रैक्टिस रो सहित आसीबो जे तोरा को क्वेश्चन विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन यू विल राइट इट then will माने I'll ensure कि आपन को सही राइटिंग स्किल ता केमति इंप्रूव हो कि कम माने स्पेस रे कम टाइम रे हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ विद द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैप्स करी की रिप्रेजेंट करी परिवे डायग्राम्स करी की रिप्रेजेंट करी परिवे विदाउट राइटिंग मच ऑफ ए थ्योरी इन ए पैराग्राफ वे सर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पार्ट एक्सप्लेनेशन टाइप रखबो ए स्ट्रक्चरल मेनते रिप्रेजेंट करियो ए सब जिंस टिके टिके माने किछि किछि बुलेट पॉइंट्स लेखि के मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स से सब वेरे मैप्स वैप्स करी की वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन दैट सर एटा को टोटल इन्फोग्राफिक्स भलिया करले हे परिबो की हां हे परिबो आपण पटे करले इन्फोग्राफिक्स टाइप रो सर्कुलर करी पटे एंती सेमति हे परिबो यस माने माइंड मैप्स अपन कर पे से भीतर हां हां सेटा को सर आपण जो मन कर गवर्नमेंट मेजर्स नै जो लाइक आपण कहले पीएम कुसुम कथा कहले हमें सेही जगह रे हमें एग्जांपल देले यस सर हां हां आपण गोटे केवल माने हेडिंग कले कि इनिशिएटिव्स बाय ए गोट राउंड टाइप कले बा गोटे क्लाउड टाइप कले गिवन एरोज एंड यू हैव रिटन दिस आर द इनिशिएटिव्स दैट्स ऑल तळे गोटे एफआईजी लिखि देबे इनिशिएटिव्स गिवन बाय टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर ना दैट इज सफिशिएंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एड्रेस ता नियति रखिबो पड़िबो सर ना कोन कहले ओनसे भी फॉरवर्ड डायग्राम कला को एड्रेसिंग ता निश्चय दैट इज इंपोर्टेंट at least for the optional हां ओम कोड सर मु टिके पचारे चंतले आपण जो गोटे मैप देखैले ठीक अछि दिग्बोई कथा कहला आसाम रो दिग्बोई रे ओएनजीसी रो तो अछि सर मु टिके जानि परनी जे रिवर बेसिन ने ही आपण कहीं सबुतिक ऑयल फील्ड गोडा को देखैले कहीं रिवर बेसिन बिकॉज़ ऑयल बेसिन गोडा को देखैले रिवर बेसिन ने ऑयल बेसिन सुनतो ऑयल बेसिन काहे के ऑयल बेसिन गोटे आउटकम कहार माने जो भी हमें क्रूड ऑयल कथा कुछ इट इज ए मराइन फॉसिल इट्स ए मराइन फॉसिल ओनली ना या माने लैंड मास फॉसिल तो केबे ऑयल हुए नहीं क्रूड ऑयल जदी फॉर्मेशन जदी जेनेसिस को जिबे आपण तो जेतबेले लिनियामेंट जेतबेले पढिबे माने जेतबेले जदी देखिथिबे लिनियामेंट सहितला माने तारो माने डिवीजन फ्रैक्शन सहितला जेतबेले इनस्टेबिलिटी आस्तिला गोटे लिनियामेंट माने गोटे एमती फ्रैक्शन माने गोटे केमती कहै लिनियामेंट माने ह्यूमन इवोल्यूशन न कथा कहउछन कि एंथ्रोपोलॉजी टाइप ह्यूमन इवोल्यूशन से आडो न लिनियामेंट रो अर्थ हेउची गोटे माने कोन कहै गोटे वीक पॉइंट गोटे
जा फल रे दीटा ए फल रे किछि एमती हितला जोटा कि सेई जो माने एरिया रो जो भी रिसोर्सेस गुडा होतले मराइन रिसोर्सेस से गुडा को किथु को पळिथिले माने गोटे टाइप ऑफ डिस्टरबेंसेस आस्तला से एरिया रे हाँ माने ओवर द हाँ फॉल्ट टाइप रो कहि परिए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फोसिल माने फोसिल जो क्रिएट हितले ताको जो माने ताको हम को कहउछन ताको माने से ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रे से फोसिल्स गुडा को कन्वर्ट हिचंदी कोडे ए जो क्रूड ऑयल रिसोर्सेस रे ओके सर थैंक यू सर सर आपण ए जो ह्यूमन ज्योग्राफी हो कि भाई ज्योग्राफी रो टोटल टा एमती फॉर्मेट रे सर पढेबे हाँ माने आज पढेले हाँ माने एमती मु गोटे एमती नोट्स मु न लिखि पारे कि माने जनरली see I'll going to give you the minimum information possible and most of the time the move on notes through ही आपण पढे दिबे Yes, sir. it's a my humble request to everyone don't share whatever information you are getting कि last भी batch रे हितला कि ओटे शेयर करथले मु बारंबार कहितले कि जेतोला आपण शेयर करचंती when you are preparing for this examination be little selfish सत्य कथा कहूची जदि सेल्फिश टिके न हेबे देन see मु बुझुची ह्यूमैनिटी इज देयर बट यू हैव टू सिक्योर योर सीट फर्स्ट देन बी ह्यूमनिस्टिक फॉर एवरीवन कि आपण निजरो रिसोर्सेस कहां को काहे कि देबे हां स्टैंडर्ड रिसोर्सेस अछि को वेबसाइट टू कॉपी करके मु देछि जो पीडीएफ्स गुडा को मु देबी अदर देन माय